Hello students, how are you? Hope all of you are safe, healthy and fine at your home during this lockdown period. Sanjeevani Education Group welcomes you for the 8th Foundation course. From today onwards, we are going to see the most important topic of chemistry for the which is important for the foundation as well as for your CBSE board as well as state board. The name of that topic is the material. Quite interesting name. But in this material chapter, we have to study about metals and non-metals. Okay, means we are going to study about the physical and chemical properties of metals and non-metals, their appearance, how they appear, their physical properties and how they react, means their chemical properties we have to study in the chapter material. But all of you know that material is nothing but matter. Material क्या होता है? Matter होता है. So I am giving here some aspects regarding to the matter. I know that all of you know about the matter. आप सभी को matter के बारे में पता है. But I think during this gap of a lockdown, during the gap of this vacation, maybe some points regarding to the matter get lost from your mind, okay, or maybe you get forgot about the properties of matter. So I am going to revise about the matter, okay. So what is meant by matter? Matter is nothing but anything around us, okay, which having mass, okay, and which occupies space. जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको एक पर्टिकुलर मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ऑल ऑफ यू नो दैट मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. मैटर को हम दो ग्रुप में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. एक जो पहला ग्रुप है मैटर का वो कौन सा है? प्योर सब्सटेंसेस. और दूसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है? मिक्सचर्स. ओके, तो प्योर को भी हम क्या करते हैं? दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. कौन से दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं? एलिमेंट्स एंड compounds. Means pure form of matter also get divided into two forms, that is elements and compounds. What are elements? Elements are the fundamental kind of particles, okay, or fundamental kind of matter. Means elements are exist in nature as it is, or whatever the synthetic elements, those are synthesized from the natural elements, जिनको हम natural elements से क्या करते हैं? synthesize करते हैं. And therefore these are known as फंडामेंटल काइंड ऑफ मैटर, जिनको हम फंडामेंटल काइंड ऑफ मैटर कहते हैं. एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल विच आर नोन एज एटम्स. एलिमेंट एक ही काइंड के छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. व्हाट अबाउट द कंपाउंड्स? कंपाउंड्स के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Molecules. We are not going to discuss about the compounds here, because we have to discuss about the metals and non-metals, and we have to see how the elements are correlated with the metals and non-metals. Okay, now elements are again divided into two types. Elements को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं. एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, बट शुरुआत जब हुई थी क्लासिफिकेशन की, शुरुआत जब हुई थी क्लासीफाई करने की ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज और अपीयरेंस, व्हेन द क्लासिफिकेशन गेट स्टार्टेड रिगार्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. एलिमेंट्स को दो ही ग्रुप में क्लासीफाई किया गया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड आफ्टर सम टाइम some of the elements were found which having the properties of both metals as well as non-metals, and therefore such elements were known as metalloids. But in this topic we are not going to discuss about the metalloids. हम इस टॉपिक में मेटालॉइड्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे. मेटालॉइड्स का एक अलग से सेक्शन है. इन दैट सेक्शन वी आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द metalloids. In this topic we have to discuss about the metals and non-metals. metals और non-metals के बारे में हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है. As you know that the classification of matter regarding the metal and non-metal is very what we can say historical classification. मतलब बहुत साल पहले ये classification हो चुका था. But what is the basis of this classification? The main basis of the classification are the physical properties of elements. जो बेसिक क्राइटेरिया था डिसाइड करने, द बेसिक क्राइटेरिया वाज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड
non-metals. So in this lecture we are going to discuss about the physical properties of metals as well as non-metals, but how there are some drawbacks, okay, of physical properties to decide whether the given element is metal or non-metal. ये भी हमें यहाँ पर देखना है, because there are some drawback. We cannot differentiate between the metals and non-metals on the basis of physical properties in modern science. Modern science में हम नहीं उसको क्या कर सकते, क्लासीफाई कर सकते, यूज नहीं कर सकते, बट वी हैव टू सी व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या, and how we are not able to classify the elements into metals and non-metals on the basis of only physical properties. हम physical properties के basis पर ही metal और non-metal को divide क्यों नहीं कर सकते या फिर classify क्यों नहीं कर सकते, वो भी हमें discuss करना है. So physical properties में हम क्या discuss करेंगे, what are the physical properties of metals and non-metals, or which are the criteria of physical properties. So first one is the state, the physical state. Second one is the appearance. Second one is the appearance. In appearance, what you have to see, you can see for appearance the texture, or you can see the color, okay, you can see what, you can see the shine, okay, you can call it as a luster also, okay. Then you have to see the hardness, okay. Then you have to see the malleability and ductility. You have to see the conductivity, okay. Then you have to see the sonorous, that property also you have to study. ये properties हमें क्या करने होते हैं, study करने होते हैं, okay, when we try to understand the physical properties of metals and non-metal. जब हम physical properties क्या करेंगे, decide करेंगे, ठीक है. So first we will try to understand how these physical properties can be observed. हम कैसे observe कर सकते हैं. In the first property, that is state, what we have to see, we have to see the physical state. Physical state में क्या observe करना है हमें, the physical state, that is whether the given element is solid, liquid or gas, that we have to observe here, okay. Second one, appearance. Appearance, you can see the color, okay, or shine. We know that transition metals जो होते हैं generally, okay, those are found in different colors, okay. So that we have to see also. Color also an important property. So silver is found in silvery color, okay, gold is found in quite yellowish color, okay. Then aluminum is again in the silvery color, copper having some brown color. So color is also a property of metal. Color भी एक metal की क्या होती है या फिर non metal की property हो सकती है. Then shine, okay, this property can be attributed as a lustrous, okay, whether the element is lustrous or not, because we know that metals have tendency to shine and it is known as lustrous or lusterness, okay. Then hardness. Hardness means how the atoms are compactly packed there. Hardness भी हमें यहाँ पर observe करना है, and then we will try to differentiate, okay. Then malleability and ductility, then conductivity and sonorous. What is meant by conductivity? Conductivity means what? Conductivity is nothing but ability to what we can say flow of electron, okay. The flow of electron, जो ability होती है flow of electron के material की, उसको हम क्या कहते हैं, conductivity कहते हैं. और conductivity हम दो type में study करेंगे. Conductivity can be observed in two ways, the conduction of heat as well as conduction of electricity, that we have to understand here. हमें understand करना है, okay. Then what is meant by sonorous? Okay, sonorous is nothing but the ability to produce sound on beating, okay. जब हम हीट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द सोनोरस. एंड व्हाट इज malleability and ductility? Malleability is nothing but the conversion of a material into thin sheet, okay, on beating. And what is ductility? Ductility is the ability of substance to convert it into wires. Wires में convert होने की जो ability होती है उसको हम क्या कहते हैं, ductility. And I think most of the property regarding to the metals and non-metals, okay, आपको पता ही होने चाहिए. You should know about these properties, but we have to explain. हमें क्या करना है, explain करना है. So let us start with the
फिजिकल स्टेट, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals. So what we have to study here? We have to study the physical properties of metals. Okay. So first we will try to understand the physical state. Okay. So most of the metals or generally metals are solids. Metals क्या होते हैं, solid होते हैं, but there are some exceptions. कुछ exception है. For example, mercury and gallium. Okay, mercury and gallium are two elements which are generally found in the liquid state at room temperature. At room temperature, most of the metals are found in solid state, or all metals are found in solid state. Only two exceptions are there, mercury and gallium. Gallium probably considered into the metalloid. Okay, so mercury is the only metal which is found in liquid form, जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है एट रूम टेम्परेचर. ओके, देर आर सम रीजन्स बिहाइंड दिस ऑल्सो, बट दैट रीजन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. हम अगले स्टैंडर्ड में उसके लिए जो रीजन्स होते हैं वो रीजन भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. यस, देर आर सम रीजन्स, दैट इज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, सो द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स जनरली सॉलिड. ओके, second one, the luster. Okay, metals shine. metals क्या करते हैं, shine करते हैं. means metal have the property of luster. okay, metals में luster की क्या होती है, property होते हैं. when you rub the surface of metal they start to shine. okay, then third one, malleability and ductility. Okay, so metals are malleable and ductile. Metals are malleable and ductile. You can convert metal into thin sheet. This property is known as malleability. And you can convert metals into wire. This property is known as ductility. That property is considered ductility. But remember one thing, the malleability and ductility for different metal is different. Okay, also the malleability and ductility depends upon the temperature factor. Okay, some metals are malleable at high temperature while some metals are malleable at low temperature. Okay, while some metals having the ductility at room temperature, while you have to heat some metals to convert them into the wire. So malleability and ductility is depend upon the temperature also and nature of मेटल ऑल्सो. मेटल का जो नेचर होता है उस पर भी वो क्या होता है, डिपेंड होता है. बट द मलाइबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व द एल्यूमिनियम हैज great ability of malleability. Okay, silver also have great ability of malleability. Ductility की अगर हम बात करते हैं, if we talk about the ductility, okay, silver has the good ability of ductility. Gold also have good ability of ductility. Okay, copper also have good ability of ductility. So therefore, generally we use the copper wires in our domestic electric circuit. Question arises, why we are not using the gold if it is good ductile and good conductor of electricity? We know that the gold is quite expensive as compared to the copper. Okay, therefore we use the copper. Ductility जो है तो copper की क्या होती है, एक अच्छा है, और copper जो है तो हम यूज़ भी कर सकते हैं. malleability जो होती है तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर में बहुत अच्छी malleability होती है, एल्यूमिनियम भी malleability होती है. malleability means conversion of metal into the thin sheet and ductility means conversion of metal into the wires. Okay, fourth one is the conductivity. Fourth one is the conductivity. We know that metals are good conductor of
heat and electricity. Okay, due to the free electrons in वैलेंस शेल ऑफ मेटल. मेटल्स के वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई दोज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट वी हैव टू discuss in the next standard. Okay, again we can see the application of the conductivity of metals. Therefore you can see most of the cooking utensils are made up of metal. So metal से क्या होते हैं, बने होते हैं. ठीक है. And the last one, that is sonorous, produce to produce the sound. It is the property of metal to produce sound on beating. So therefore you can see, जो स्कूल में जो पहले बेल रहते थे, इलेक्ट्रिक बेल नहीं थे तब, तो क्या यूज़ करते थे, तो मेटल की बेल यूज़ करते थे. व्हाई दोज पीपल्स use that metal bell? Because it can produce the sound. And the last important point, okay, that is hardness. We know that metals are very hard. metals क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा hard होते हैं. ठीक है. there are some metals which are not hard. बहुत कुछ metals ऐसे जो hard नहीं होते. for example सोडियम है, पोटेशियम है. ओके, ये मेटल तो इतने सॉफ्ट होते हैं, यू कैन कट दिस मेटल्स विद द हेल्प ऑफ नाइफ. यू कैन कट दिस मेटल्स विद द हेल्प ऑफ नाइफ. ओके, सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ये मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्राई टू रीड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट बुक्स. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज आस्क, ओके, ऑन द ग्रुप. I will try to resolve it. Okay, so for today it's okay. In tomorrow's lecture we will going to discuss about the physical properties of non-metals, and then we differentiate between the physical properties of metals and non-metals, try to understand the exceptions and why physical properties of metals and non-metals is not a good criteria to classify them. ओके, मतलब ये गुड क्राइटेरिया क्यों नहीं, इस पर भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच.